the shortest, and this Warshall. In mining, that's we all the pure disease. And graph we matrix. If there is no matrices way to be in, and this as the find the A that take this intermediate vertex, whether able to the so the first will be unmarked. The similar elements will be matrices, which elements to be vacant. Nothing is filled here. To find this element and third column, writing it here, will get this A2 comma 3 for get it from the numbers at the respective location. So how we do to the map than this one, we go to application to combination. Two parts this because we're five on as an we divide it into 1, comma 3 goes in the middle. Here 1 from a 3 in finding. So by 0 it's equal to 2, this value. A0 1 is A the infinity. 8 plus infinity will be again an infinity, and x is our Excuse me, sir. minimum the two nodes. As such, we will take directly No, from sir. here. Sir, your voice is breaking. Will call to find it A comma 4 again minus in the previous list. So equal to A0 into become A plus A0 of 1 comma 4. So when I see the value A0 2 comma 4, this is 2, this is 4. The second row and fourth column, that's infinity here. So when I go to the right hand side, A02 comma 1, this is 2,
this is 1, that's equal to 8, plus a0 of 1 comma 4, this is 1 and this is 4, that's equal to 7. So 8 plus 7, that's 15, and 15 is less than infinity. So we need to relax it here, replacing the value infinity by 15. And this is just one way of saying that if we had to go from node 2 to 4, 2 to 4, so initially there was no direct path in between the two. That's why we have initialized it to infinity in the first iteration. Then if we look to the graph, because we can see, but the software can't see. Software has to calculate those steps. The algorithm which we are designing, that won't be able to visually directly see that there is a path from this to this, and he will directly take it. So if we see, if we go from this 2 and introduce this 1 as the middle, because we are finding the A1th matrices, that means we are introducing one node 1 in the middle. So if we go from 2 to 4, we will go to 1, introducing in middle, which is equal to 8. Then from 1 to 4, which is equal to 7, that's 15. And that's what we are actually modifying here. So similarly, the remaining nodes, the remaining values, so if we directly shift to 4, and I will reach to this place. So I had to find actually this 4 comma 2. So accordingly, we will actually update all the values here. And if we look to this value, that's 4 comma 3, the fourth row and third column. That's infinity, and that remains unrelaxed. So the reason is that we are not able to find any value which is lower than infinity. Okay, that's why in the first iteration, when we found introduced the node 1 as the intermediate, this remains even unmodified. Why? Because if we had to, you just perform this calculation a comma, those people who understand what I am saying, perform this calculation. You have to find a04 comma 3, a04 comma 3, like we did, and performed this calculation in the same way. You had to perform with this, like this, a0 of 4 comma 3. So it will be equal to how much? A0 of
introduce 1 in the middle. 4 comma 1 plus 1 comma 4. Huh? नहीं एक्चुअली इस मैट्रिसेस पे देख लीजिए ना, बिकॉज वी आर इन मैट्रिक्स फर्स्ट. 4 comma 2. Because we go from 4 to 1 initially, and from 1 to 2 then. Okay, this is 2, this is 3. So yes, it was a typo. And similarly for this one, 4 to 3. It's again infinity because there is no reachable goal. We won't be able to reach it. So that's why we have now got, it should be then here, it should be 5 also, because I had taken it as an image, it should be 5 here. This is again a typo here. Because I had taken this as a photograph of this one as it was 8, it again came 8 here, but it should be 5 here in place. So now we need to take now the next node, which is node 2. That's this node. We have to take and make it as an intermediate node. And from this matrices, because now we are finding A2, but the matrices which is 1 less than this one, that's A1. We will find it from the values of this one, like we found this from the values of A0. We will now update this one in the next iteration to find if there are any more weights which we could relax. So now, since it is the second matrices, so the elements which will remain unchanged will be the second column and the second row, and again the diagonal elements. Everything which is in red color, that will remain unchanged. So for the remaining ones, that is this and that, we had to find the corresponding relaxed weights. So here it's 2 comma 3. Initially we had to relax these two weights also. Yes, because this is the first row. The only thing which will remain changed are these red color. So we don't have to update it. So wherever we find a black one, we have to update. So in the first row itself, when we go from this row 1 and column 3rd, this is 5. So that means we have to relax A1 comma 3, the first row and third element. First row, third column. So that could be relaxed as A1 comma 2, introduce this second node in the intermediate. Like we did in the previous one, we introduced the node 1. Here we are introducing the second one as the intermediate one. So divide this A comma 1 to 3 into A comma 1 to 2 and A comma 2 to 3. So A comma 1 to 3, A comma 1 to 3. This we have to take from the previous matrices, because we are actually taking from A1. We don't know the value of A2 1 comma 3. That's why we are finding it. And where we will find it from the previous matrices itself. That's why it's A1 1 comma 3, A1 1 comma 2. We are taking these values into consideration. So go into this matrices and see what is at 1 comma 3. That's infinity here. Is it? Is it infinity? That's why we have to modify. Huh? Here, one row and third column. Then on the right hand side, A1, 1 comma 2. So this is first row,
this is the column second, that's 3, plus a 2 comma 3, this is 2 and this is 3, so this is 2. So it will become 3 plus 2, that's equal to 5. So 5 is less than infinity, so initially it was infinity a comma 3. So 5 is less than that, let's modify the infinity value to 5. कौन कौन खो रहा है? ये स्टेप जो दिए हैं ना, ये बाद में आप फिर भी इसको देख के पता चलेगा कि कैसे हो रहा है. Now we were actually finding these black values. So when we found this 5, we have done it. Now the next one is the 7. And if we find 1 comma 4, this is 1 comma 4. Okay, this is the first row and the fourth column. Because I'm introducing, this is the logic of this algorithm. So we are actually trying to understand the logic of this algorithm. So we can't say that why he's introducing this 2 in the middle. So like it was introducing the node 1 in the previous one. Now for this matrices, we are introducing node 2. So when we had to go from A to 4, we had to see is there a path from 1 to 4 via 2. We had to introduce node 2 in middle. Whose cost or whose weight or whose distance will be lower than what we have already got from 1 to 4. Since that distance we have got is 7. So let's see whether we get any value introducing the second node which is lower than this 7. Let's see. So we divide it into 1 to 2 and then 2 to 4. So 1 to 2 means 1 and this is the second column, that's equal to 3, plus a of 2 comma 4, this is 2, this is 4, that's 15. So if we introduce the node 2 as an intermediate one, we get the cost more than what we already got. So we will not update it. That's why 7 is unchanged here. So here it is infinity, this weight is changed again. Why? 4 comma 3. This is fourth row, this is third column. Initially the value was infinity, and in this matrices the value is changed to 7. So the reason is that we had to find the value a comma 4 comma 3. We have to find a 4 comma 3 here, and that will be again equal to a 1 4 comma 2 plus a 2 comma, and once we found that value from this matrices, find this value, find this value. Okay, you can directly look to the matrices and found this value. 4 comma 3 we had to find. Why then it's 7 here? 4 comma 3 एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये वाला, इसकी जगह 10 आएगा. वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 7 क्यों है फिर? नहीं, यहाँ पे हमारा एरर था ना पहले, यहाँ पे एरर था, इसलिए ये इसमें हमने इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि ये इमेज वैल्यू है. आप इसको यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे ये है 5 है. तो फिर भी इट वाज अ नाइस ऑब्जर्वेशन, सो द वैल्यूज विल बी करेक्ट. तो ये मॉडिफाई हुआ ये वाला वैल्यू. So we have got the second matrices. So we had to do it 4 times because we had to find this for all the nodes. We had done it for this one, we had done it for this one. The remaining 2 are 3 and 4. So we will do for these 2 nodes.
So in order to get it from node, this matrix is 3, we have to take it from matrices which is 1 less than this 3, that's matrices 2, from here. But in this case, the third row and the third column, including the diagonal, as previously said, that will remain unchanged. So the values we need to find are those black values. That's 3, 6. It's actually empty in this matrices, but the locations are, we have to find the value a1 comma 2. Yes, and since this is for matrices third, we will find it from matrices 2, which is given to us. So here one example is given a1 comma 2, 1 comma 2. That will be equal to a1 comma 3 plus a3 comma 2. So the only thing we are doing, introducing this node 3 in the middle, taking 3 as an intermediate vertex. So a1 comma 2, but from this matrices, 1 comma 2, that's equal to 3. Here 1 comma 3, 1 comma 3 is equal to 5 plus a3 comma 2, 3 comma 2, that's equal to 8. So it will be equal to 8 plus 13, that's greater than. So the value which was already present at location 1 comma 2, which was 3. So that is the minimum value, we will keep it as such. So similarly, for remaining values, you can use the same logic. Okay. Whatever the value we have to find, we have to use the same logic, introducing this element. And if the new distance becomes less than the previous one, we will modify it until we reach to the last matrices. That's equal to the number of nodes. We have to do it repeatedly until we get it equal to the total number of nodes inside the graph. So when we reach to a fourth, the first step we will do, we will keep all those fourth row and fourth column values as unchanged, including the diagonal, and the remaining ones in black color, we have to actually update them. And updation will be taken from the previous matrices using these formulas, but introducing now the node 4 in the middle. And this is a kind of matrices which we will get finally. All right. And when we get the matrices whose size or whose iteration number is equal to the iteration number of the total number of nodes inside the graph, we will stop here, and the values in that matrices will be the shortest distance from every node to every other node. So this final matrices, if we take for this graph, we will be getting the shortest distance from 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. Similarly, from 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 4 to 1, 4 to 3, 4 to 4. And this will be the all pure shortest path algorithm. And if we look again to this algorithm, we see that at each iteration, in fact, we are using this formula. We are using a formula like this kind of. So without looking to the formula initially and getting those values, we have found these values, and from the values we will deduct the formula. What we were doing? What we were doing is that we were actually finding the kth matrices, second, third, fourth, whatever, and its elements I comma j. Here we are finding the a third matrices, a second matrices, and then its elements. So those element values of the particular matrices we were taking as what? Forget this minimum for some time. We were taking it from the matrices which was 1 less than this matrices. If it is a third, we were taking it from a second. That's why a k minus 1 I comma j from the elements of the previous matrices, comma, or either we were taking it a k minus 1 I comma k, we were taking it from the previous matrices
but after incorporating another node in between middle. It was I comma j, now we are taking it from I to k and k to j. So we were taking the values either from the previous matrices in case there was no relaxation, the minimum value is already found, or either this one, or we were taking it from previous matrices again by introducing another node, k node, plus this is the formula which we were using it here. A k minus 1 I to k plus a k minus 1 k to j. That again reaches to a k minus 1 I to j. So among those two values, whichever is minimum, we take that in this matrices. Okay. So here 3 plus 15 will be this part. Okay. And this a of k, it will be equal to this part. So among those two, 3 plus 15 and 7, whatever is minimum, we take that corresponding element in the kth matrices. So the pseudo code is again the same thing, what I have written it here. We are actually finding the element inside the matrices after every iteration by taking this assumption into consideration. From a I to j, either this thing or the addition of these two after incorporating the kth matrix, this kth node in the list and finding the values of these two. Whatever among them is minimum, that will be put in this new matrix. And this loop we iterate for n times, this we iterate for n times, and this one we again iterate for n times, and the meaning of this thing is for generating the different matrices. When k is equal to 1, it will then give us a of 1. It will give this matrices. Outer k will be equal to 2. Internally, it will then iterate for n square times, and it will give k is equal to 2. It will give this matrices. So similarly, when it goes on, finally, the complexity of this algorithm as seen from the above little pseudocode is also order of n cube, because the 3 times the loop is iterating. So it means that its complexity in terms of asymptotic notation will be order of n cube. And this exam is going to be now the offline mode. Huh? So the next problem is knapsack problem. As we are very much familiar, are we having some foreign students in this class? No? So I am the only foreigner. We can use the Hindi for some time also. है ना? तो हमारे पास 0-1 knapsack problem है. Okay. Don't lie on my Hindi. It will be cool after some time. So we have already seen the knapsack problem, but that was a kind of fractional. हमारे पास अगर चीनी की चोरी करनी थी या चावल की चोरी करनी थी तो हमारे पास ऑप्शन था कि वी कुड हैव टेकन हाफ ऑफ दैट. जब हम 0-1 knapsack पे आते हैं तो either there are two choices. We have to take this item or we don't have to take. Because it is like you have to steal a refrigerator, you have to steal something like the fridge. So you can't take one part of the fridge and keep the remaining as such. या तो आपको लेना है पूरा का पूरा या तो छोड़ना है पूरा का पूरा. That's 0 and 1. And this problem is solved using dynamic. This is very important. The fractional one we solved using the greedy method. No. So again, for the purpose of the recap, we are having a bag of 8 size. The total amount we can introduce inside this bag is 8 kg. The number of items are 4. The profit of every item is given 1, 2, 5, 6, and the corresponding weight is also given.
So the conditions of knapsack, as we know, is to maximize the profit and keeping the condition into consideration that the weight, total weight should not be greater than the allowable weight in this bag. So इसमें टोटल 8 kg हम भर सकते हैं. तो टोटल जितना भी हम आइटम इसमें ऐड करेंगे उनका वेट सम होके इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. इक्वल टू हो सकता है या इसके लेस देन भी हो सकता है. दिस इज द सिंपल कंडीशन. सो अब आप देख लीजिए नंबर ऑफ सोल्यूशन कुड बी. पहले तो हम कोई भी इसमें चीज ऐड करने से मना ही करेंगे, है ना. हम कोई भी आइटम इसमें नहीं डालेंगे. कोई भी आइटम ना इसमें ऐड करने का मतलब है कि वी आर असाइनिंग 0 वैल्यूज टू ऑल दोज आइटम्स. और दूसरी चीज हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम सारे के सारे एलिमेंट डाल सकते हैं, बट इन दैट केस द टोटल वेट विल बी ग्रेटर देन m. बट इफ द टोटल वेट इज स्टिल लेस देन और इक्वल टू m, मीन्स हम सारे आइटम ऐड भी कर सकते हैं. तो जहां जहां 0 यहाँ पे है, जहां जहां 1 है, दैट मीन्स वी आर एडिंग दैट एलिमेंट, वी आर नॉट एडिंग दैट एलिमेंट. एंड दिस वे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है टोटल में. तो अगर मैं इनकी कॉम्बिनेशन बनाऊं कि कैसे मैं इन आइटम को ऐड कर सकता हूं, कैसे ऐड नहीं कर सकता हूं, सो आई विल गेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पावर 4. सो एक मेरी कॉम्बिनेशन ये हो सकती है कि मैं किसी को ऐड नहीं करने जा रहा हूं. दूसरी ये हो सकती है कि सभी को ऐड. तीसरा ये है कि मैं पहले 3 को नहीं करूंगा, इस वाले को करूंगा. This algorithm, when solved using the recursive functions, it takes this much of time, 2 power n. Okay, because everything is to be calculated and checked. And that's why the dynamic programming concept has been introduced in order to solve this 0-1 knapsack problem. ये यहाँ पे ही समझ लीजिएगा, क्योंकि ये समझने में फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, मुझे भी और आपको भी. So dynamic programming then comes and it solves this problem in a less amount of time than taken by the ordinary traditional logic. So ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है, इसके बारे में हम देखेंगे. हमें एक टेबल बनाना है, क्योंकि हम टेबुलर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. 2 टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग आर मेमोराइजेशन एंड टेबुलर. तो हमने बोला कि मैक्सिमम टाइम टेबुलर मेथड, सो वी विल गो फॉर द टेबल. सो वी विल टेक हियर on this horizontal axis, or you can say on this row, we can take from 0 to 8, which means this is weight of the bag. या तो हम कोई भी आइटम नहीं डालेंगे तब वेट 0 होगा, या हम 1 डालेंगे, 2, 3, 4 ऐसे करके के we will reach to 8 total weight. That's why here I have written weight here, W. And in that size, this is just the indices 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Now जब मैं यहाँ इस रो, चूंकि ये रो जो है ये 0 है, ये जो कॉलम है ये भी 0 है. जब मैं यहाँ से 0 स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से भी 0, तो मेरा मतलब क्या है कहने का कि मैं कोई आइटम इस बैग में नहीं डाल रहा हूँ. तो नो मैटर, जब मेरा 0 वेट है बैग में, ये जो अंदर आइटम्स मैंने इसमें भर दिए हैं ये वाले, ये प्रॉफिट है, रिटर्न इट हियर प्रॉफिट. तो यहाँ से ऊपर वाले इंडेक्सेस वेट है, यहाँ से इसको हम असाइन, और ये जो अंदर वैल्यूज है दीज आर इंपॉर्टेंट. तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि जब मेरे पास 0 आइटम है, मैं कोई भी आइटम बैग में ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो नो मैटर कि मेरे पास बैग हो ना हो, प्रॉफिट तब भी 0 ही आएगा, है ना. और जब मैं फिर यही मैं कोई आइटम नहीं ऐड कर रहा हूँ, इवन आप अगर तब भी बैग में 1 kg की स्पेस है, क्योंकि मैं आइटम ही ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो फिर से प्रॉफिट 0 आएगा. इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ. तो ऐसे कर करके मैं यहाँ पहुँचता हूँ कि भाई अगर 5 kg का बैग है, स्पेस है 5 kg की, चूंकि मैं आइटम ही कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ 0, तो प्रॉफिट फिर से 0 ही आएगा. ऐसे कर करके इवन इफ इट 8 kg, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग हियर इन इट, so again the profit will be 0. So this will be the first case, the first row and column of this matrices. So now the actual logic starts from here. That's where hang the first element
द फर्स्ट। सो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ये आइटम को लिखा है, PI will stand for their props and WI will stand from their weights. So it is 1 2 1 2 item number first, 2 3 2 3 item number second, 5 4 6 5. So अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो मैं इसको बता रहा हूं कि मैं एक आइटम ऐड करना चाहता हूं, और वो आइटम कौन सा है? द फर्स्ट वन, 1 2। यहाँ से इसमें मैं प्रॉफिट इसका लूंगा और इसका वेट लूंगा, ठीक है, यहाँ पे हूं मैं। तो अब जब मेरे पास 0 kg खाली है बैग में स्पेस, और मैं आइटम ऐड करूं या ना करूं, तब भी प्रॉफिट मेरा 0 ही आएगा, है ना, है कि नहीं? क्योंकि 0 kg अवेलेबल है, इसका मतलब है कि 0 kg ये वेट है, तो 0 आएगा। अब इसका है ये 1 है, मतलब 1 kg मेरे पास अवेलेबल है, बट चूंकि इस आइटम का वेट जो है वो 2 है, तो ये फ्रैक्शनल नहीं है, दिस इज 0 1, ईदर आई कैन टेक, आई कांट टेक। जब इसका वेट उससे ज्यादा है तो मैं इसको नहीं ले सकता हूं, फिर से प्रॉफिट 0 ही होगा, है ना। अब तीसरी बार, अब मेरे पास वेट बन गया 2, सो आइटम मेरा है, एक ही आइटम है, तो मैं देखूंगा कि इसका वेट कितना है, 2, यस आई कैन ड्रॉप इट हियर, और इसका प्रॉफिट कितना है, 1, वो प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि वेट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, है ना। उस आइटम का जो मैंने यहाँ पे रख दिया, उसका मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया। अब चूंकि मेरे पास एक ही आइटम है, द फर्स्ट आइटम जो पहला मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, तो अगर उसके बाद 3 kg मुझे दिया, 4 kg, 5 7 8 kg तक भी अगर मुझे दिया गया बैग, क्योंकि आइटम एक ही है, नो मैटर मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरे पास प्रॉफिट एक ही आ जाएगा हमेशा, 1 1 1, है ना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, एलिमेंट नंबर 2 which is its profit, and 3 which is its weight, this thing here। तो अब इस केस में मैं फिर से देखूंगा, 0 है तो 0 आएगा, जब 1 है, क्योंकि इन 1 kg मेरे पास बैग है, क्योंकि इन दोनों आइटम का जो वेट है, इंडिविजुअल वेट 1 से ज्यादा है, तो ऐड नहीं कर सकते हैं, 0 है। इसमें हम जब 2 आ गया, इस वाले आइटम को मैं नहीं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि इसका वेट जो है वो 3 है ना, तो मैं इसी आइटम को ऐड कर सकता हूँ, तो अगेन इट विल रिमेन चेंज। सो अब आप शुरू से चीजों को मत देखिएगा, अब आपने क्या करना है, जब भी आपका नया आइटम आएगा, सपोज आई हैव टेकन न्यू आइटम हियर 2 3, सो इसका जो वेट है दैट्स 3, आई विल डायरेक्टली गो टू दैट प्लेस हियर 3, है ना। तो जब बैग मेरा उसकी स्पेस इसके स्पेस के बराबर आएगी या ग्रेटर देन, तभी तो मैं इस वजन का आइटम इसमें डाल सकता हूं। सो यहां तक जो वैल्यूज है वो बिल्कुल वही आएगी जो प्रीवियस रो की होगी। चेंज कहाँ होगा, जब मेरा वेट 3 kg है और मेरा इस आइटम का वेट भी 3 kg है, और चूंकि ये मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मतलब कि मैंने ये आइटम इसमें ऐड किया, है ना। इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, ये वाला भी कर सकता हूँ कि नहीं, मगर आई हैव टू सी विच इज द मैक्सिमम प्रॉफिट यील्डिंग, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको प्रॉफिट 2 लिखा, मतलब मैंने ये आइटम ऐड किया। अब जब मेरे पास बैग में 4 kg की कैपेसिटी आ गई, बट मैं दोनों आइटम को ऐड करना चाहूँ क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए, बट दोनों का मिला के मेरा 5 kg बनता है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें फिर से मैं यही एक आइटम को रखूंगा जिसका प्रॉफिट 2 है। आई विल देन गो टू दिस प्लेस, एंड चूंकि यहाँ पे मुझे कैपेसिटी दी जाती है 5 kg, है ना, तो मैं दोनों को मिला के ऐड कर सकता हूँ, 3 + 2, यस, और उसका प्रॉफिट मिलके क्या हुआ, 2 + 1 दैट्स 3, है ना। अब चूंकि दो ही आइटम मैंने यहां तक ले लिए, तो नो मैटर मुझे 6 kg दिया जाए, 7 8, बाकी की स्पेस खाली रहेगी, और जितना प्रॉफिट यहां तक मैंने कमाया वही यहां तक भी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल प्योर शुद्ध देसी भाषा। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट आइटम को लेना है, कौन सा है, 5 4, 5 4, और चूंकि इसका वेट जो है वो 4 kg है, विच मीन्स कि जो प्रीवियस आइटम है फ्रॉम 0 to 3 वो अनचेंज रहेंगे, जो 0 to 3
0 to 3 यहाँ तक जो आइटम है those will remain unchanged एंड चेंज कहाँ हो जाएगा, जहां मुझे कैपेसिटी बैग की दी जाएगी 4। जब मुझे बैग की कैपेसिटी 4 दी जाएगी, इसका मतलब है कि मैं इस आइटम को ऐड कर सकता हूं, क्योंकि इसका वेट भी 4 kg है। तो इसका प्रॉफिट उस टाइम कितना है, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5, है ना। तो मैं प्रॉफिट को यहाँ पे लिखूंगा। अब फिर से मुझे 5 kg दिया जाता है, बट चूंकि मैं इन 3 आइटम मेरे पास है, देखो मैंने ये यहाँ पे ये जो ये बनाया है ना, इसका मतलब है कि जब मैं नया आइटम देखता हूँ, मैं खाली उसी को नहीं देखता हूँ, मैं उसके आगे भी सभी आइटम को फिर देखता हूँ। हियर द पॉइंट रिटन हियर टेकिंग सेकंड रो, जब मैं सेकंड रो को लेता हूँ मींस 2 3, इग्नोरिंग ऑल रो, जितने भी रो है उनको मैं इग्नोर करता हूँ, बट नॉट द फर्स्ट रो, जो इससे पहले रो है उनको मैं इन करता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई। 2 3 जब मैं लेता हूँ तो मैं 1 2 को भी इंक्लूड करता हूँ। जब 5 4 में लेता हूँ तब मैंने ये बड़ी डायग्राम बनाई ग्रीन की। इसका मतलब है जो उससे पहले है 2 3 हो 1 2 हो, मैं इनको भी इन करता हूँ। तो मैं पहुंचा था यहाँ पे। अब जब मुझे 5 kg दिया जाता है, चूंकि अगर मैं इसमें से किसी भी आइटम को लूं, ये 5 kg से ज्यादा बन जाता है। 4 + 3 7 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, तो मैं इनमें से किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा प्रॉफिट फिर से वही रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही आइटम इस बैग में है। नाउ बैग वेट इज गिवन 6, सो 6 मतलब कि मैं इस आइटम को 5 और 4 और इस आइटम को 1 और 2 जो पहले दिया गया, इन दो को ऐड कर सकता हूँ। 4 और 2 6 हो गया, 5 और 1 हो गया 6, तो मेरा प्रॉफिट 6 आएगा, है ना। यहाँ तक सभी साथ हो। तो अभी 7वां वेट 7 दिया गया है मुझे, तो वेट 7 देने का मतलब है कि इसका 4 kg है, इस आइटम का 3 kg है, तो इनको मिला के जो प्रॉफिट मुझे आएगा दैट विल बी मैक्सिमम, सो आई विल गेट 7 5 + 2। और उसके बाद जब मुझे 8 दिया जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबों को ऐड करूं, क्योंकि 4 + 3 7 2 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, 8 will violate the condition, so my previous weight will be again the same, है ना। सो यहां तक ये 3 रो फिल करने तक हम ऐसे इसको फॉलो कर रहे थे, बट इसके फॉलो करने का और एक तरीका भी है, दैट इज अ फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज गिवन, switch off your mics, mute yourself. So the formula is like we are finding this V stands for this table, maybe a 2 × 2 array, और उसका हमने फाइंड करना है I, W. I will be its row, this thing, W will be its column, this thing. That's the weight. That's why it's weight parameter here. So हम कैसे फाइंड करते हैं, हम करते हैं कि हम पहले इस मैक्स को फिलहाल हटा दीजिए दिमाग से। हम इसके एक जो रो है उसके पीछे जाते हैं। वी गो Vi -1, वी गो 1 बैक टू दिस रो, इससे पहले वाले में हम जाते हैं। अगर हमने इसको फिल करना है तो हम इसकी इस वैल्यू को देखते हैं, है ना, कामा, उसके बाद उसका वेट भी ऐड करते हैं, कामा V of I -1. So this formula will not get into your mind until we solve an item. Suppose we have to find this V4, 1, क्योंकि यहां तक हमने इस टेबल को फिल कर दिया। अब इस रो को भी हम फिल कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे हमने यहां तक फिल किया, बट वी विल फिल दिस वन यूजिंग द फॉर्मूला, है ना। तो इसका पहला आइटम क्या है, 4, 1, क्योंकि ये तो 0 होगा ही, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि हम कुछ भर ही नहीं रहे तो प्रॉफिट भी 0 होगा। तो 4, 1, 4, 1 का मतलब क्या है वो फाइंड आउट कर दो, है ना। 4, 1 को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैक्स दिस थिंग, V दिस थिंग, I, -1, I -1 will be equal to 4 - 1, that will equal to 3, comma, this weight is
द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर, है ना, क्योंकि मैं फाइंड कौन सी प्लेस कर रहा हूँ, ये वाली, तो इसका कॉलम क्या है, दैट इज दिस वेट, सिंस इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1, सो टिल हियर आई हैव फाउंड। उसके बाद फिर से एक कामा है, उसके बाद v है, उसके बाद फिर से अंदर i माइनस 1 है, i फिर से है 4 माइनस 1, दैट विल अगेन कम अप टू बी 3, कॉमा, उसके बाद w माइनस w ऑफ i, w मीन्स फिर से ये कौन से कॉलम में है, उस कॉलम का वेट क्या है, तो फिर से वो 1 है ना, है ना, क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे हैं जिस कॉलम में ये होगा उसका वेट वैल्यू क्या है, 1 ही है ना, अरे 1 ही है ना। और ये w ऑफ i मीन्स कि जो रो है, ये तो कॉलम की बात हुई, जो रो है उस रो पे जो आइटम है, ये रो है, उस रो पे आइटम कौन सा है, 6 5, यही है ना, यहाँ पे फोर्थ पे, उसका वेट क्या है, उस आइटम का वेट क्या है 5, वही 5 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना। उसके बाद ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद पी ऑफ आई का मतलब क्या है कि उस आइटम का प्रॉफिट भी ऐड करना है इसको, उस आइटम का प्रॉफिट है 6, वो हम इसको ऐड करते हैं, पी ऑफ आई, because our I initially is we are starting from this 4, so this is P of 4 comma 1, है ना, और यही आइटम हम फाइंड कर रहे हैं 4 comma 1। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, V 4 comma 1 is equal to max V 3 comma 1 V, this will be 3 and this will be minus 4, है ना। और अगर आप टेबल में देखोगे there is no such location, -4 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो it is an undefined symbol and we ignore it, है ना। जब ये अनडिफाइंड है तो हम इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब है v4 comma 1 जो है that will be already v3 comma 1 because this whole term will be ignored here, yes, 3 comma 1, 3 and 1 that is 0, so you will put 0 here, हाँ, मैक्स तो अब रहा नहीं, एक ही टर्म है क्योंकि वो इनवैलिड हो गई। तो ऐसे कर करके मैं 4 कामा 2 फाइंड करूंगा, 4 कामा 3 फाइंड करूंगा, 4 कामा 4 फाइंड करूंगा, और यहाँ तक चूंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के जरिए फाइंड नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू सेम आने जा रही है जो प्रीवियस रो में थी, हाँ, चेंज होगी 5 के बाद, जब 5 पे हम पहुंचेंगे तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इसका इंडेक्स क्या है, 4th रो एंड 5th कॉलम, है ना, तो मुझे फाइंड करना है v ऑफ 4 comma 5। सो इसको फाइंड करने के लिए मैं फिर से फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैक्स अंदर v, और दिस विल बिकम v minus 1, v is equal to 4, so it will become 3 comma 5 comma v अंदर फिर से 4 minus 1 that will be equal to 3 comma, अब हम यहाँ पे पहुंच गए, वेट, इस टाइम वेट क्या है उस कॉलम का, अब 5 है ना, तो हम 5 लिखेंगे और माइनस इसको करेंगे जो उस आइटम का वेट है, क्योंकि हम 4th रो पे है तो ये आइटम तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो उसका वेट 5 है ना, प्लस उसका जो प्रॉफिट है 6 वो ऐड करेंगे, so that means v of 4 comma 5 will become equal to max, so 3 comma 5 इस जो प्रीवियस रो पे वैल्यू है एट लोकेशन 3 comma 5, उसका वैल्यू लेना है, वो 5 के बराबर है ना, और v of this will become 3 comma 5 minus 5 will become equal to 0, plus this is already equal to 6, so 3 comma 0 it is equal to 0, so that's why I have written 0 here, उस 0 को ऐड हो जाएगा इस 6 के साथ, हाँ, so it will become max of 5 comma 6 in total, max of 5 comma 6, तो इनमें से मैक्सिमम कौन है 6, so I will introduce that 6 here, तो ऐसे कर करके I am getting all the values in this row, this is 6, this is 7 and this is 8, और वही वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड की 6 7 and 8,
और अगर इस फॉर्मूले में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है समझने में, तो जो हम प्रीवियसली रूल फॉलो कर रहे थे आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक तो हमने इसको फाइंड किया था। अब ये वाला रो हमने फाइंड करना था। हम क्या बोल रहे थे कि ये वाला रो फाइंड करने के लिए जो प्रीवियस आइटम जहां तक है, क्योंकि हम ये आइटम ऐड कर रहे हैं 6 5, इसका वेट कितना है 5, तो इसका मतलब है जब तक हमारा वेट बैग की वेट 5 kg नहीं हो जाएगा तब तक हम इस आइटम को ऐड नहीं कर सकेंगे। तो उससे पहले तक जितना भी हमने प्रॉफिट कमाना था वो हमने कमा लिया पिछले रो से ही। अब जब हम इस वाले को ऐड कर रहे हैं, हमारा वेट 5 kg है अब बैग का, तो मतलब हम इसको ऐड कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट हमें कितना मिलता है 6। अब वेट दिया गया है बैग का 6, बट चूंकि इसका 5 है और यहाँ पे कोई आइटम नहीं है जिसका वेट 1 है ताकि 6 हो जाएगा टोटल। तो अगेन आई कुड बी एबल टू ऐड ओनली दिस आइटम विद अ प्रॉफिट ऑफ 6। सो देन वेट मेरा दिया गया है 7। जब 7 वेट दिया गया है इसका मतलब है मैं इस 5 वाले को भी ऐड कर सकता हूँ, इस 2 वाले को भी ऐड सकता हूँ। 5 + 2 7 हो गए और प्रॉफिट हो गया 6 + 1 7। जब 8 हो गया, जब 8 हो गया तो इसका मतलब है मैं किस किस को ऐड कर सकता हूँ, जिस 5 + 3 को। 6 + 2 कितना हुआ 8, इसका प्रॉफिट मुझे उस टाइम आएगा। तो उससे भी यही रिजल्ट निकलते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हम इस टेबल में देखेंगे दैट इज दिस लोकेशन, लोकेशन नंबर 4, 8। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 8, है ना। तो अब मैं इस वाले स्लाइड पे जाता हूं। मैं फिर से इन आइटम को रिप्रेजेंट करता हूं x1 x2 x3 x4। दीज आर दोज आइटम्स जो मुझे ऐड करनी है इस बैग में। तो चूंकि इट इज अ बाइनरी नैपसैक 0 1, या तो मैं इस आइटम को ऐड करूंगा या नहीं, या इस आइटम को ऐड करूंगा या नहीं, यही तो सोल्यूशन है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस आइटम को ऐड करूंगा जिसका प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम है, दैट्स 8, है ना। तो उसके लिए मुझे देखना है कि ये जो 8 है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट 8 जो है, क्या इससे पहले वाले एक रो में ये 8 था कि नहीं था। समझ आ रहा है। जो मैक्सिमम वाला प्रॉफिट होगा ना, मुझे वो देखना है कि जिस रो में ये अभी है, मीन्स ये रो 4th में है और रो 4th मेरा 6 5 आइटम है, 6 5 आइटम मेरा x4 है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे तब आ गया जब मैंने इस लास्ट आइटम को ऐड किया x4। बट चलो मैं देखता हूं कि उससे पहले वाले रो में कहीं 8 तो नहीं है मैक्सिमम प्रॉफिट, नहीं किसी में नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है कि x1 x2 x3 x4 ये मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे x4 से मिल गया। तो इसको मैं ऐड किसी भी हाल में करूंगा ही करूंगा, ठीक है। जब मैंने इसे ऐड किया, टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है 8, और 8 में से मैं इस आइटम को ऐड कर रहा हूं, दिस इज द 4th आइटम, है ना। और इसका प्रॉफिट कितना है 6, तो इसका मतलब है 8 - 6 = 2। सो अभी मेरे पास 2 प्रॉफिट बच गया और, है ना। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे, अब 2 प्रॉफिट मेरा कौन सा है, ये वाला है। पहले तो ये वाला है कि नहीं। बट चूंकि इसका मतलब है कि मुझे ये x4 से मिल गया, बट मैं इससे पहले वाले रो पे देखूंगा कि 2 किसी और आइटम से तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ये x3 से आ गया, दिस इज द x3 x3rd रो। तो x3rd रो पे जाने से पहले मैं ये देखूंगा कि कहीं इससे पहले वाले रो में तो नहीं था ये 2। तो जब मैं यहाँ जाता हूँ तो ये ये वहां पे ऑलरेडी था, और ये किसकी वजह से था, x2 वाले एलिमेंट की वजह से। तो जिस रो में ये एलिमेंट होगा, ये प्रॉफिट होगा, मैं उसी को ऐड करूंगा, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको, जहां पे जिसमें ये था। तो इसका मतलब है कि ये ना x4 से हुआ है ना x3 से, ये यहां से हुआ है। क्योंकि अगर मैं इससे पहले वाले रो में भी जाऊं वहां पे 2 नहीं होगा, लास्ट जहां पे होगा। तो इसका मतलब है जो 2 और प्रॉफिट मुझे ऐड करने x3 से तो नहीं हो जाएगा, उससे पीछे में जाऊंगा x2 से, वहां से हो जाएगा, है ना। और जब x2 से हो जाएगा टोटल मेरा आ गया बराबर। सो इसका मतलब कि मुझे x1 को भी ऐड नहीं करना है।
and the total profit will be then equal to the 8. और ये एक एग्जांपल दी गई है how the 0 1 knapsack problem is solved using the recursive methodologies. और recursive methodologies में फिर से वही प्रॉब्लम आती है जो हमने कल फिबोनाची सीरीज में देख ली, that we compute a single function for so many times, which leads to the problem of overlapping subproblems. That's why we then come up for the tabular method using the dynamic approach. So with this, it's time to finish this lecture. So